But so I don't think anybody saw this kind of collapse, and I think that बुमराह का जो point है, the point is कि कुलदीप ने आपको वैसे ही फंसाया हुआ था. उनका first change bowler pacer हार्दिक पांड्या है. Like अगर सिराज का off day चल रहा है तो you still have Pandya to fall back on. पांड्या 7-8 पर ओवर पे जा रहा था मगर विकेट ली थी ना उसने, इम्पोर्टेंट ली थी ना. ये विकेट टेकिंग अटैक थ्रेट इस अटैक में हर एंगल से. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट सेइंग दैट 155 for 2 से भी आई डिडंट थिंक at that point कि पाकिस्तान are in total control of this. Partly it was also the fear कि यार वो लोग 320 भी बना ले, India will chase it down. So I never thought they were fully in control, and then obviously I feel like उस्मान ये मतलब बिल्कुल भी सैटिस्फैक्टरी नहीं है रिस्पॉन्स, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सवाल क्या था, एक्सपेक्टेशन है कि बस कि पाकिस्तान ऐसे कोलैप्स होता वैसे कोलैप्स होता. मगर मुझे 155 पे 2 पे जो अकेली स्ट्रेस थी कि अभी तक रैम्बो का एक्सटेंट आना है, मुझे था कि ये एक बड़ा क्रूशल टाइम पे कि अभी रन्स भी नहीं बन रहे और रैम्बो ने भी आना है, तो यहाँ पे गेम बदल सकती है. एंड ऑब्वियसली गेम उसी दौरान बदली. In the India attack, I would put Rambo's threat between Bumrah and Kuldeep Yadav, somewhere between. Yeah, and that was the thing कि वो coincide हुआ है उसी स्पेल में. रोहित को मे भी शायद वो लोग बता रहे थे कि जी रैम्बो आने लगा है तो अपने तुम स्ट्राइक बॉलर्स ले आओ. बट आई थिंक कि अभी बहुत सारे लोग एक तो कमेंट्स में ये कह रहे हैं कि इसको ड्रॉप करके उसको लाओ, उसको ड्रॉप करके इसको लाओ, ये वो. आई थिंक इस फॉर्मेट का एक फायदा, पोटेंशियली फायदा ये है कि आपके पास इतना टाइम है और इतने मैचेस हैं. और अभी कल ही मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर का वो देख रहा था और उससे किसी ने पूछा था कि अगर आप एक मैच, बहुत करीबी मैच लास्ट सेकंड में हारते हैं, या एक मैच आप ब्लो आउट 50 पॉइंट से हार रहे हैं, विच इज द हार्डर वन टू गेट मूव ऑन फ्रॉम. एंड ही इज लाइक कि जो करीब वाला मैच होता है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप पूरी रात सोचते रहते हैं यार अगर मैंने ये किया होता, वो किया होता, ये किया होता. इज लाइक द मिनट यू लूज अ ब्लो आउट, तो उसी वक्त आप अपने आप से कहते हैं भाई अभी खत्म हो गया, जस्ट मूव ऑन. Like in a way it's easier to deal with like a loss जो पाकिस्तान ने अभी जिस तरीके से हारा है, as compared to आप जैसे जो वर्ल्ड T20 में जिस तरीके से हारे थे मिसाल के तौर पे. That being said, obviously पाकिस्तान made it to the final. यहाँ पे अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ है. 2 major banana peels. Like Afghanistan in Chennai on the one surface जहां आपको पता है कि बॉल स्पिन होगी, और अफगानिस्तान की अगर कोई भी चांस है छोटी सी इस टूर्नामेंट में कुछ करने की, वो उसी तरह की पिच पे है जिसपे राशिद खान और मुजीब और these guys also वैसे ही एक कांटे वाली राइवलरी है, kind of always at each other, टेंस रहता है, टेंशन रहता है. मुझे I don't know, हम ये कह रहे हैं ना कि it's easier for a side to get over this kind of loss. Maybe it is in a way. मुझे लगता है, अंदाजा है कि जो टीम है ये, it probably is that kind of team that moves on from this kind of loss fairly easily and quickly. मगर I feel like उसमें ये भी एक है कि a loss like this sometimes amplifies जो आपकी weaknesses हैं, जो holes हैं आपकी टीम में ना, वो एकदम amplify कर जाती है, and they can then become a bigger thing in your head than they actually are. इतनी जो बुरी डिफीट होती है ना, then you kind of like कि हाँ यार देखो हमारा मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा होल है. Somebody like Babar for example, when he made 50, and that was a poor dismissal by the way, Babar. I know it's his get out shot and stuff, but when he makes 50, if he is the kind of captain जिसका trust वैसे ही कम है थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में, for him a collapse like this is waving all kinds of red flags in his head. Right, and that's the kind of thing that I think Pakistan would worry about. That a collapse like this will reinforce his worst fears about the middle, and then affect the way he and the top order continue back. That's one fear. I mean, I think if that मेरे ख्याल में ये बात जायज़ है, क्योंकि बाबर की कप्तानी को जिस तरीके से हमने देखा है, डेफिनेटली बहुत एक कॉशियस कंजर्वेटिव वो है. और एट द सेम टाइम आई थिंक अगर रैशनली देखा जाए तो ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर में सबने रन्स बनाए हैं ऑलरेडी इन दिस वर्ल्ड कप या कमिंग अप इनटू दिस, राइट. तो 2 ही मैचेस में आपके पास काफ़ी सबूत है कि मिडिल ऑर्डर में मसला नहीं है. टॉप ऑर्डर में आपको मसला हो रहा था, अभी भी इट्स नॉट रियली सॉर्टेड. बट आई थिंक कि अगर मैं बाबर हूँ तो मेरी सबसे पहला फोकस होना है कि आई नीड टू गेट 100 सून. लाइक
एक तो इस वर्ल्ड कप में हर बंदे ने 100 मार दी, कोई 17,000 100 हो चुकी हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली कि आज वाले मैच में दैट वाज आई थिंक यू नो बाबर लेवल प्लेयर से एट दैट मोमेंट दैट डिसमिसल वाज रियली शॉकिंग कि Yeah, इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग इज कि इट फील्स लाइक आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे थे, यू काइंड ऑफ अज्यूम्ड कि ये शॉट लग जाएगा या यू टुक योर आई ऑफ द बॉल, और इट्स लाइक एन अनफोर्स्ड एरर, राइट? लाइक इट्स नॉट कि ओ unforced इट error, yeah. कि जो रिजवान वाली बॉल थी, शादाब वाली बॉल थी, और एक्सेलेंट हाँ, डिलीवरीज, यू नो इफ्तिखार, even if he gloved that on, you could tell कि Yadav, both Saud and Iftikhar were really uncomfortable playing him. yeah, They kept yeah. playing him off the wrong length. हाँ, So the Babar dismissal is really shocking, because at that moment you just hit 50. You're expecting कि, like, this is the moment he kind of announces himself at this stage, इस वर्ल्ड कप में as कप्तान के तौर पे, like world class batter के तौर इस पे, rivalry में, yeah. yeah, और इस I rivalry में felt like exactly. Babar ka jo shot, I mean that's his get out shot, right? That's his pressure reliever. He's Yeah, very exactly. good at playing that. He's very Yeah, good. Like he turns it into a boundary shot quite often. जब उसका सही होता है ना, तो he actually turns it because he for goes so sure. fine. लेकिन I thought that dab he attempted it because he was trying to relieve pressure, but it was pressure that he himself had built, I think, on himself. You know, he was, I think until he Yeah, was 33, he was going over run a ball. और फिर वो अचानक से काफी उसका स्लो डाउन हुआ था, एंड रिजवान एट द अदर एंड वाज टेकिंग रिस्क्स. रिजवान कोशिश कर रहा था कि आई नीड टू, लाइक, कीप गोइंग, बिकॉज आई थिंक दोनों में अंदाजा था कि पिच थोड़ी सी स्लो हो रही है, इट्स ग्रिपिंग, स्पिनर्स आर टेकिंग अ बिट मोर कंट्रोल, बट रिजवान का रिस्पॉन्स था टू ट्राई एंड इम्प्रोवाइज, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ हिज गेम, टू काइंड ऑफ कीप अ मूव ऑन. Babar's response, I felt like it was to become more kind of inert, more conservative, and then he got himself into a position where उसे लगा कि यार मुझे pressure constantly relieve करना है, जो टिप हो रहा है, I need to keep relieving it. This is my go-to shot. मुझे पता है कि मैं इससे करता हूँ, but the ball was too straight, it was too close, he came down on it too late, and yeah, it's a error of judgment, but I think it's a error born from his own kind of failings in building that pressure upon himself. हाँ, आई थिंक मैं इस बात को भी वही एतराफ करना चाहूंगा कि एज यू सेड, लाइक यूकेस के गेट आउट शॉट इज, इट्स आल्सो स्ट्रेंथ. आप जब उस पे Yeah. रन बन रहे हैं, उसकी दाद दे रहे हैं, सो यू हैव टू एक्सेप्ट के एवरी नाउ एंड देन इल गेट आउट. इट जस्ट फेल्ट के वही, आई गेस, या मैं आई एम बीइंग हार्श, क्योंकि वो आप जब इस शॉट खेलते हुए आउट होंगे तो हमेशा बहुत खराब लगेगा. अगर आप आउट Exactly. होंगे to Siraj, who is the pressure the stress buster, as Rambo would say, तो What a line. वो और भी बुरा लगता है. और ऑब्वियसली उसी के बाद आपका 8 विकेटों का कोलैप्स शुरू हुआ है, तो वेदर उसकी गलती है या नहीं है, मगर वहां पे जो It was a सिंबोलिज्म sign of उसकी आ crucial जाती moment. है.